Bachcho, how are you? I hope you all are doing well and studying well. And children, tell me one thing. Do you remember the concepts that you've learned so far? Yes? Right. So, bachcho, do you know what is a subject? And do you know what is a verb? Right. So, अब हम देखेंगे कि subject और verb का agreement क्या होता है. Okay? That's the name of our chapter. Subject, verb, agreement. Okay? So, let's look at this. Hello kids, read the following sentences. A cock crows early in the morning. Okay? All cocks crow early in the morning. Ram and Shyam go to school. So, बच्चों यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पे आप देखोगे जो कॉक वर्ड यूज हुआ है, ओके, इट इज इन अ सिंगुलर नंबर, ओके, वन कॉक, ओके. तो द वर्ब क्रोज इज ऑल्सो इन सिंगुलर नंबर, ओके. अब रिमेंबर दैट अ वर्ब दैट एंड्स इन एस इज इन द सिंगुलर नंबर एज गोज, प्लेज एक्सेट्रा. ये सिंगुलर नंबर में यूज होता है, ओके. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस आप देखोगे कॉक्स, ओके, ये प्लूरल नंबर में है. So the verb crow is also in the plural number. Alright? So जहाँ पे आप देखोगे कि subject है plural, तो जो उसका verb होता है वो भी plural ही होगा. Okay? So similarly, Ram and Shyam in the third sentence is also a plural subject which takes the plural verb go. Okay? हम goes नहीं लिखते हैं. Goes हम कब यूज करेंगे? when we are talking only about Ram or only about Shyam. So when we say Ram goes to school, ठीक है, Shyam goes to school, तो वो हो जाता है हमारा सिंगुलर नंबर में. जब हम प्लूरल यूज करें तो go हो जाता है. Okay, clear? So it means that a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. In other words, the verb must agree with its subject in number. तो हमेशा जो verb होता है subject के साथ agree करना चाहिए number का जहाँ सवाल आता है उसमें. Okay? So, just as a verb agrees with its subject in number, similarly it also agrees with its subject in person. Okay? For example, I go to school. He goes to school. So, बच्चों यहाँ पे आप देखोगे I and he, they are both singular pronouns. Okay? But I belongs to the first person. Okay? I आता है, you आता है, फिर he, she, it आते हैं. Okay? So वैसे ही, so I होता है first person में. Okay? इसके लिए वो plural verb okay लेता है. Whereas he जो है वो third person में आता है. Okay? And that is why it takes a singular verb. Okay? Thus we can say that a verb must always be in the same number and person as its subject. Okay? This is called subject-verb agreement. Okay? अब इसके कुछ rules है. There are some important rules of subject-verb agreement. Let's look at that. First rule. When two or more singular subjects are joined by and यूज करके जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, द सब्जेक्ट इज रिगार्डेड एज प्लूरल एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अरुण एंड वरुण आर गुड स्टूडेंट्स. अर्जुन एंड भीमा वर ग्रेट वॉरियर्स. ओके, अर्जुन एंड भीम वर ग्रेट वॉरियर्स. अरुण एंड वरुण आर गुड फ्रेंड्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एंड यूज करके उनको ज्वाइन किए, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किए हैं. ओके, एंड इसकी वजह से हमने आर वर्ड यूज किया है या वर्ड यूज किया है. ओके, टू शो दैट इट इज इन प्लूरल टेंस. ओके, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और आइदर और नाइदर नॉर, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आइदर गीता और सविता इज एट होम. तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट को हम और यूज करते हैं, ओके, ये या वो, आइदर दिस और दैट, नाइदर दिस नॉर दैट. ओके, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. आइदर गीता और सविता इज एट होम. नाइदर केशव नॉर हिज सिस्टर was there to help us. Okay, next one. When two subjects, singular and plural, are joined by or, either or, neither nor, the verb is used according to the subject closest to it. Okay,
तो यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं जब जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं आइदर वो सिंगुलर हो, ओके, व्हेन टू सब्जेक्ट्स सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, ओके, जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं और, आइदर और, नाइदर नॉर, ओके, तब द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू इट। तो उसके पास में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ओके, हम उसमें वर्ब्स यूज करेंगे। जैसे आइदर सौम्या और हर पेरेंट्स आर इन द ऑफिस। तो आप देखोगे पेरेंट्स जो है प्लूरल है, तो इसके लिए हमने सौम्या के साथ वाला जो ये नहीं यूज किया, हमने पेरेंट्स के साथ वाला जो आता है वो वर्ब यूज किया विच इज आर। क्लियर? नाइदर हर पेरेंट्स नॉर सौम्या इज इन द ऑफिस। अब ये बन जाता है सिंगुलर बिकॉज सौम्या आता है वहां पे, इट्स वन पर्सन, सौम्या इज। ओके, क्लियर? इफ अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, the verb agrees with the subject and not with the noun in the phrase. If a phrase comes between the subject and the verb agrees with the subject and not with the noun in the phrase. Okay, तो अगर phrase में subject और verb आते हैं तो जो verb है it will agree with the subject and not with the noun. Okay, so each of my teachers has gone home. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये है ना सब्जेक्ट ईच, ओके, उसके साथ हैज़ को लिंक किया जाएगा, टीचर्स के साथ नहीं। ओके, ईच ऑफ माई टीचर्स हैज़ गॉन होम। ओके, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स वॉज वेरी ब्रेव। तो इसको हमने सब्जेक्ट किंग के साथ लिंक किया है। ओके, नाउ अ कलेक्टिव नाउन इफ टेकन एज अ होल agrees with a singular verb. For example, a school of dolphins was diving into the sea water. Okay, school के साथ was. Alright, a herd of elephants is roaming around the forest. तो collective nouns हमने जो किए थे उसके साथ अगर आता है, okay, if taken as a whole, then we will make the subject verb agreement, okay, singular verb as per the name, okay, the name of that collective noun. Clear? This is school was diving. Okay, a school of dolphins, it will be considered as one word. Okay, was diving into the sea water. A herd of elephants is roaming around the forest. Clear? Next, words like each, everyone, one, no one, nobody, etc. agree with singular verbs. Okay, for example, one of the apples was rotten. No one was ready to speak. Either is good to play with. Each of the boys was punished. तो यहाँ पे words like each use हुआ है, everyone, one, no one, nobody. अगर वो वाले verbs use होते हैं तो वो singular verbs के साथ agree कर जाता है. Okay, one of the apples was rotten. Okay, one was. Okay, no one was ready to speak. Clear? Now, next one is words like all, many, several, okay, agree with plural verbs. जो हम all, many, several, आप देखोगे they are more than one. Okay, that's why you will say that it will be used in a plural form. Okay, all my friends were going to see the cinema. Many of the clothes are out of fashion. Clear? Okay. Next one, words like here and there are not the subjects of a sentence. The subject follows the verb and verb is used in agreement of the subject. For example, here is the key. Here are the keys. Clear? तो यहाँ पे आप देखोगे words like here and there use हुआ है, okay, are not the subjects of a sentence. So, the subject follows verb and verb is used in agreement. तो आप देखोगे subject जो है वो बाद में आता है. It comes after the verb. जैसे key has come after is. Keys आया है after are. Clear? Okay. So when distances, period of times and sums of money are considered as a unit, we use singular verb. So for example, 10 kilometers, it is considered as one unit. 10 kilometer एक unit की तरह consider किया है. So is quite a long distance to walk. 2000 rupees is
too much for this pair of shoes. Clear? तो यहाँ पे जब हम उसको if it is more, okay, but we consider them as one, जैसे collective nouns में हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे, we considered it as a one thing. Okay, clear? So now let's be smart, and for that what we have to do, we have to solve the exercises. So choose the correct verb from the brackets and fill in the blanks. Okay, अभी आपको bracket में जो verbs दिए है उससे correct वाला जो है appropriate one you have to choose and update in the blank. Okay, so now let's look at the first one. Ram and 3 other boys dash punished. So ये क्या बन जाता है? Ram and 3 other boys. तो हम क्या लेंगे? We'll consider the second one. Okay, and के बाद वाले 3 other boys, तो वो होता है plural, तो यहाँ पे आएगा plural, तो वो होगा were. Okay, Ram and 3 other boys were punished. Okay, a ring as well as a brooch. Okay, dash means stolen, तो as well as a brooch. Okay, so second one भी हम उसको consider करेंगे. Okay, a ring as well as a brooch has been stolen. Clear? Ranbir with Amit dash in the garden. Okay, तो यहाँ पे हम बोल नहीं रहे कि रणबीर एंड अमित नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं रणबीर with अमित is in the garden. So we talking about रणबीर. Clear? Okay, ऐसे ही जल्दी जल्दी अपने आप सेंटेंस को पढ़ो और रूल्स को कंसिडर करना है. सबसे पहले बिफोर यू डू द एक्सरसाइज जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं यू हैव टू रीड देम एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्व द exercises. They're pretty easy. Okay, next one, fill in each blank with a verb in agreement with its subject. Okay, a bunch of grapes dash hanging high over the vine. So bunch of grapes, we will consider this as one. Okay, a bunch of grapes is hanging high over the vine. Each of the boys dash tired. Each matlab singular. Okay, every person, okay, from that boys ka group is tired. Each of the boys is tired. Either Rustam or Saurabh dash to be blamed, is to be blamed. Clear? Okay, now जल्दी जल्दी बाकी sentences जो है अपने आप solve करने हैं. Remember, reread the chapter. I'm telling you again and again because it is very important to read the chapter again so that the concepts are clear and you don't have any difficulty while using these words or these different grammar concepts in your real life when you're doing your writing skills. Okay, they will always help you with your creative writing and your writing. Alright, so get going, read the chapter and solve the exercises.